फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट है बी ए ऑनर्स ज्योग्राफी, उससे रिलेटेड मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ। सेमेस्टर 1 में जो पहला टॉपिक है वो जियोमॉर्फोलॉजी पे है और उसके अंडर जो फर्स्ट टॉपिक आता है जियोमॉर्फोलॉजी का वो आता है नेचर एंड स्कोप। तो आज हम नेचर एंड स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। The word geomorphology was first coined and used between the 1870s and 1880s to describe the morphology of the surface of the earth. But it was popularized by the American geologist William Morris Davis, who proposed the geographical cycle, also known as Davis cycle. Geomorphology is an important branch of physical geography. It is concerned with the scientific study of the origin and evolution of the relief features of the earth. The term geomorphology has been derived from Greek words and combination of three words, that is ge, which means earth, morphe, which means form, and logy means a discourse. Thus, geomorphology is the description of various forms of the earth's surface. Geomorphology is the systematic and organized description and analysis of various landforms of the earth. The word landforms includes not merely micro features of the land but also major relief features such as continents, plain and plateaus, and a discussion of their origin and evolution is equally relevant. Geomorphology is the scientific study of the origin and evolution of topographic and bathymetric created by physical, chemical, and biological processes operating at or near the Earth's surface. P.G. Worcester defined geomorphology as the interpretative description of the relief features of the Earth. According to Strahler, geomorphology is an analysis of the origin and evolution of Earth features. Geomorphology does not merely study the physical, chemical, and biological processes affecting the evolution of landforms, but also the structure of the earth crust, the geological processes, as well as the climatic influences, because it is the combined influence of all these factors that determines the landform. According to W.D. Thornbury, geomorphology is the science of landform, including the topography. A.L. Bloom also defined geomorphology as the systematic description and analysis of landscape and the processes that change them. According to German geologist Machatschek, geomorphology is the study of the physical processes fashioning the form of the solid surface of the earth as well as the resultant landform. तो यहाँ पे हमने जो भी डिफरेंट ऑथर्स हैं उन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी का कौन कौन सी डेफिनेशन दी है वो मैंने यहाँ पे डिटेल में प्रोवाइड कराया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है नेचर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है साइंटिफिक नेचर। जियोमॉर्फोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म. It gives scientific account of the physical face of the earth. Spatial relations through geological timescale are analysis in this subject. Second category, interdisciplinary nature. Geomorphology is interdisciplinary by nature. It has close relationship with other branches of natural science, that is geology, hydrology, biology, chemistry, geophysics, meteorology, pedology, engineering, etc. और लास्ट कैटेगरी है डायनेमिक नेचर. फेस ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बिकॉज ऑफ इट इज डायनेमिक नेचर. दीज चेंजेस आर कॉज्ड बाय बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी.
The subject matter of geomorphology incorporates structure, process, systematic analysis, and evolution of landform. Structure is an arrangement of interrelated elements in a material object or system. It is determined by internal force which include plate tectonic, dystrophism, and volcanic action. It includes study of geomaterials, that is lithology, deposition of rock beds and composition of rocks, etc. नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपके स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी पे वो है प्रोसेसेस. Processes are mainly related to external or exogenic forces. These forces contribute to shape a landscape. They are also called destructional process or denudational processes. Systematic analysis and evolution of landform is also important in geomorphic evolution, like structure and processes, because the interaction of surface processes with geological structure does not provide adequate explanation of landform unless we include the explanation of the length of time the process has been operating, which will give us an idea of the relative stage of development. For systematic analysis of landform, we can classify landform into three categories. They are generic classification of landform, second is genetic classification of landform, and third is classification on the basis of scale and lifespan. Now the first is generic classification of landform is the description of entire group or class of landform, that is mountain plateau and plains. Example is Himalayan mountain ranges, Tibetan plateau and northern plains in India. Second is genetic classification of landform. It means classification of landform by dominant set of geomorphic processes. For example, tectonic landform, fluvial landform, karst landform, alien landform, coastal landform, and glacial landform. Third part is classification of landform on the basis of scale can be understood by rearranging the earth landform into three different categories. For example, first order relief features, it includes continental platform and ocean basin. Second order relief features, the relief features of the second order are superimposed on first order category of landform, for example plains, plateau and mountain. Lastly, third order relief features are superimposed on second order relief features such as valleys, canyons, and dunes. Two major approaches in geomorphology are historical approaches, which involves historical evolution of landform, and second approach is functional approaches. It involves time independent series of landform evolution reflecting association between landform characteristic and existing environmental condition. तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो. मैंने आपको पूरा जो आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है बीए ऑनर्स का डीयू में उसका जो फर्स्ट टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी नेचर एंड स्कोप उस पर नोट्स प्रोवाइड कराए हैं. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. साथ ही साथ मैं अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगी ताकि अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए हो, असाइनमेंट चाहिए हो या प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. आपको सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है. मैं दोबारा से अपनी स्लाइड्स को स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली ये नोट्स जो है विजिबल हो जाएं. इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के भेज सकते हैं, या मेरे कोई नोट्स आप लोगों को क्लियर ना हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख कर भेज सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही था. नेक्स्ट वीडियो तक बाय.